Operation of reinforcement. Dear students, operation of reinforcement is itself biggest operation involved in the operant conditioning theory. As we know that reinforcement simply means any environmental substance or event which accelerates the rate of responses from an organism. For example, food, water, money, encouragement, etc. are various reinforcers. And these reinforcers help us to increase the rate of responses from an organism. जैसे कि हम सब जानते हैं that reinforcers are being called the heart of learning. It means no learning is possible without the reinforcement when we will look through the prism of operant conditioning theory. Operant conditioning theory believes that it is the reinforcement which help us to shape the behavior of an organism. अगर हमें लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो we must use the various types of reinforcers, or we should use the rewards. The various rewards and incentives will definitely help to boost the performance of an individual or any organism. किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए reinforcement का होना जरूरी है. That is why reinforcers are being called the heart of learning. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर हम reinforcement को बाहर निकालेंगे या स्विच ऑफ करेंगे, it leads the organism in the state of extinction. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. So the reinforcement actually helps to motivate the learner, motivate the organism in order to perform the particular type of task. Dear students, how reinforcement is important? For example, if the learner is doing very hard work, performing the task, it is because of the reinforcement. If the laborer is performing the hard tasks, it is because of the reinforcement. If the worker who is working in the industry, the industrial worker is doing leaps and bounds work, it is because of reinforcement. Because reinforcement is known as heart of learning. जो ही हम reinforcement को withhold करते हैं या sit off करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकता है, वो अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. इसीलिए B.F. Sickner mentioned that it is the whole learning which revolves around the reinforcement. Dear students, reinforcers are classified into various categories. Number 1, positive reinforcers. Dear students, positive reinforcers are basically pleasant type of stimuli. It means individual or organism performs the activity in order to gain the pleasure. यानी कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म कोई भी टास्क परफॉर्म कर लेता है क्योंकि एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में उसकी विल होती है, मोटिवेशन होती है. पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स आर pleasant type of stimuli. Now, what are the pleasant type of stimuli? Pleasant type of stimuli means the things which will give the pleasure to the organism. For example, food is the positive and pleasant stimulus. Water is the positive reinforcement. Sexual contact is the positive reinforcement.
Wealth and property is the positive reinforcement. So individual performs the activity in order to gain the pleasure, keeping in view the positive reinforcement. Positive reinforcement does not only give us the pleasure to the organism or individual while performing any type of activity, but it also helps us to strengthen the behavior of an organism. Positive reinforcement always encourages or motivates an individual to remain in the state of learning. Why? Because individual or organism gets the pleasure. तो वो प्लेजर हासिल करने के लिए वो लर्निंग स्टेट में रहना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, लर्नर को जब अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती है या मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो लर्नर लर्निंग सिचुएशन में बाय विल रहना चाहता है. अगर हम एक वर्कर की बात करेंगे जो एक इंडस्ट्री में काम करता है, बोनस एक्स्ट्रा मिलने से वो वर्क ज़्यादा फास्ट करता है और कंटिन्यूअसली चाहता है कि उस काम को अंजाम देना. वाई? बिकॉज एक्स्ट्रा बोनस गिव्स द प्लेजर टू द इंडस्ट्रियल वर्कर, और सिंपली वी कैन से दैट लेबर, और वो उस काम को और मजबूती से करना चाहता है. So this is the positive reinforcement or reinforcers. Nutshell, we can say that positive reinforcers are pleasant type of stimuli. These are the pleasant type of substances or incentives which help us an individual or organism to emit the responses by means of will. तो will से वो response को emit करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें प्लेजर मिलता है वो टास्क परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज दे आर रिवॉर्डेड बाय द पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स. जिस तरीके से हमने बहुत से पॉजिटिव रीइंफोर्स की एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल, फूड इज द पॉजिटिव रीइंफोर्सर, वाटर इज द पॉजिटिव रीइंफोर्सर, सेक्सुअल कंटैक्ट इज द पॉजिटिव reinforcer, medals, wealth, and other incentives are the positive reinforcers.